हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू विशाखा क्लासेस। और आज का ये जो वीडियो मैं लेके आई हूँ वो है एमकॉम पार्ट 1 अकाउंटेंसी पेपर 1 एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो पीछे टेक्स्ट बुक के पीछे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उन सभी के आंसर्स आज मैं लेके आई हूँ। कोई कोई लेसन्स के पीछे के आंसर्स टेक्स्ट बुक में पहले से ही दिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे लेसन्स हैं जिसके पीछे के आंसर्स आपको प्रोवाइड नहीं है, लेकिन आपको ये सभी के आंसर्स आपको मिल जाएंगे विशाखा क्लासेस में। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर देना जिससे आपको मिलती रहे नोटिफिकेशंस। एक और अपडेट दे देती हूँ मैं आपको। इससे पहले मैंने अभी रिसेंटली आज के ही दिन अपडेट किया है, मैंने एमकॉम के जितने भी पार्ट 1 के सैम्पल क्वेश्चंस पेपर के सॉल्यूशन मैंने अपलोड कर दिए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपको ये सब सॉल्यूशन और कहाँ पे भी नहीं मिलेंगे, इसलिए फटाफट जाइए देखिए। अगर आपको एमसीक्यूज नहीं मिल रहे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको एमसीक्यू नाम की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे आपको सभी मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्टली क्वेश्चन। Preparation of consolidated balance sheet of holding company and its concerned companies as per the section 21. The share of outside in the net asset is subsidiary company is known as under the fourth minority interest. The pre-acquisition profit is in consolidated company is considered as the capital profit. Excess of cost of investment over the net asset of subsidiary company considered as goodwill. Profit earned before purchase of the shares is treated as capital profit. Preparation of consolidated statement as per the accounting standard 21 is mandatory for the listing company. The consolidated statements are prepared for subsidiaries company. Holding company shares in capital profit of subsidiary company is adjusted in the cost of control. Unrealized profit on goods sold and include in stock in debtors from the revenue profit. The face value debtors of subsidiary company held by the holding company is deduction from the cost of control. Minority interest include all of the above. The next question. The time interval between the date of acquisition of shares in subsidiaries company and the data of balance sheet of holding company is known as post period की बात की जा रही है यहाँ पे, तो उसका आंसर है सेकेंड. The pre-acquisition of dividend received by the holding company is credited to third answer investment account. Next question. The post dividends received by the holding company is debited to profit and loss account. When the cost of acquisition is more than the cost of investment in subsidiary company is transformed to goodwill. Which exchange rate will be considered for conversion of shares capital of subsidiary company is fourth, the rate of which date the shares are acquired actual date. Under the Maharashtra Cooperative Act, a society must prepare the final account for the year ended in the form N. Person who keep custom maintain accounting records is accountant. Day-to-day management of society waste is managing committee. Explanation of member can be done by the register. As per the Society Act, no part of profit distribution by the way of dividends is majority's member. Receipts and payment acts can be prepared by the cooperative society, not required. Under MSCS Act, a society must prepare the following financial statement for the accounting period is receipt and payment. Under the Maharashtra Cooperative Society Act, the audit of the cooperative society can be conducted by the chartered accountant.
A member who hold jointly share of society in his name appear first in the shares capital is a none of the above. Amendment of the bylaw of the society can be done by the registration of the society. Every society earned income must pay income tax only if it sells the goods to the non-member. The consumer society can sell goods to member. Goodwill is shown in the balance sheet of a cooperative society under the headline of miscellaneous expenditures. Cash and bank balance shown the under heading in the balance sheet none of the above. आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर देना। अगर आपको और भी एमसीक्यूज चाहिए है तो उसका अपडेट मैं आपको दूंगी एंड ऑफ द वीडियो, इसलिए वीडियो को आखिरी तक बने रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व फॉर द बेड्स एंड डाउटफुल डेब्ट इज शोन अंडर द हेडिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज contingent liability. The money value of repeated of the business concern is goodwill. Goodwill is the intangible assets. While calculating the capital employed, following assets are include trade investment. While calculating the super profit, following income include is normal profit. Normal profit dependent on the both A and D, NRR and FMP. Super profit is none of the above because इसका आंसर है excess of average profit over the normal profit. Interested value of shares is also known as liquidated value. While calculating the capital employed for the valuation of shares, following assets are include goodwill. Shares are to be valued on all of the above. Recorded shares means listed on the stock exchange. Super profit is 13,20,000, NRR 33:1:3%. Goodwill is valued by capitalization और सुपर प्रॉफिट इज कुछ नहीं करना है आपको, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन परसेंटेज जो एनआर का परसेंटेज दिया है उसे आपको यहाँ पे मल्टीप्लाइडेड डिवाइडेड कर देना है, जिससे आपको आंसर मिल जाएगा 39,60,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स कैपिटल इज shares is equal to wild value. If the profit earned by the company for the last 5 years is rupees 15,000, 16,000, 19,000, 80,000, the weighted asset is 1, 2, 3, 4 respectively. The weighted average profit is, इन सबको आप प्लस कर दो चारों को और डिवाइडेड बाय कर लो 4, 5 से और आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा 17,000. Fixed cost undervalued by the 15% is rupees 97,75,000 and if market value is 1,11,55,000. The preparation of consolidated financial statement as per the accounting standard 21 is minority. Goodwill is not fixture but intangible assets. Inter-office adjustment net will appear in the balance sheet of the bank under other liabilities only. Credit balance in overdraft are shown by the bank under other liabilities. The provision regarding the audit of a cooperative society under Maharashtra State, the Cooperative Society Act are contained in Section 81. The date shows stocks item are shown in the balance sheet of a cooperative society is under fixed asset. The narration disclose which are contained in the published company accounts cover the both quantitative and quantitative information. Means answer is C.
फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी स्टॉक वैलेंसीज बोलते या वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक भी ऑप्शन में आ सकता है। द फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल सेलेक्टिंग द एरर अकाउंटिंग पॉलिसीज ड्यूअल concept. The next, total number of IFRS are 19. The segment reporting is covered in under section 17. यहाँ पे मैंने आपको सभी के टेक्स्ट बुक के पीछे के जो क्वेश्चंस MCQs दिए थे उन सभी के आंसर्स मैंने बता दिए, और बाकी के जो आंसर्स है वो आपके पहले से ही टेक्स्ट बुक में दिए हैं उनके आंसर्स, इसलिए वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। जिसके नहीं दिए थे वही मैंने यहाँ पे बताया है। आई होप आपने सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन लगा हो तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। जितने भी आपके फ्रेंड्स से जो भी MCOM पार्ट 1 कर रहे हैं उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत काम की चीज़ है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको देने वाली एक अपडेट जहाँ पे आपको मिलेंगे MCOM पार्ट 1 के सारे MCQs आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। तो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है टेलीग्राम चैनल का, मैं बता देती हूँ कैसे वहाँ पे जाना है आपको। उसके लिए आपको सबसे पहले टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करना है, लिंक नीचे दिया है, आप वहाँ पे डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो, नहीं तो बताती हूँ कैसे जाना है। ये देखिए ये है टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे अगर आप सर्च करते हो विशाल क्लासेस तो आप डायरेक्टली पहुँच जाओगे वहाँ पे। तो मैं सर्च कर लेती हूँ, तो यहाँ पे ये देख सकते हो यहाँ पे पूरा चैनल आ गया है। तो यहाँ पे आपको जाना है, नीचे अगर आपको ज्वाइन बटन दिखेगा वहाँ पे आप ज्वाइन पे क्लिक कर देना। अगर थोड़े ऊपर की तरफ आओगे तो वहाँ पे आपको MCQ सभी के मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये है TY के दिए हुए हैं, वैसे ही यहाँ पे MA के दिए हैं, MCOM पार्ट 1 के भी प्रोवाइड्स किए गए हैं। ये देखिए ये सभी आपको यहाँ पे MCOM पार्ट 1 के यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको बहुत काम आएगा। यहाँ पे आप आ सकते हो, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको PDF मिल जाएगा। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि पासवर्ड कहाँ है। स्टूडेंट्स आप अगर नीचे की तरफ इसी के नीचे PDF, हमेशा ध्यान रखना PDF के नीचे ही आपको आंसर्स का जो हमारा पासवर्ड दिया है वो आपको PDF के नीचे ही मिल जाएगा। तो जैसे आपने मेरे को बताया, मैंने आपको ये है आपका PDF, ये है यहाँ पे क्लिक, देखो यहाँ पे लिखे हैं MCOM पार्ट 1 MCQ क्वेश्चन बैंक ऑल सब्जेक्ट्स विद द आंसर्स दिए हैं। और देखो वॉच दिस वीडियो टू गेट द पासवर्ड ऑफ द न्यू सेट ऑफ MCOM पार्ट 1। इससे पहले और भी प्रोवाइड किया है, ये वापस प्रोवाइड किया गया है। इस वीडियो पे अगर क्लिक करोगे ये वीडियो देखिए, सर ने कहाँ पे भी एक पॉइंट पे अगर आपने पासवर्ड सर ने डाला हुआ है वो पासवर्ड देखिए, आप एक जगह पे लिख लीजिए, फिर आके यहाँ पे आपका जो भी रहेगा किसी पे भी क्लिक कीजिए, सभी के लिए सेम पासवर्ड है। बस आप एक बार कॉपी पेस्ट करके भी वहाँ पे आप रख सकते हो और बार बार उसको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे आपको सभी MCQs यहाँ पे मिल जाएंगे। एक चीज़ और, अगर आपको मॉक टेस्ट देना है तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए विशाल क्लासेस मॉक टेस्ट में अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, जिससे आप वो भी आप टेस्ट यहाँ पे दे सकते हो। हम ट्राई कर रहे हैं कि और भी यहाँ पे अपलोड्स कर दें आपके लिए। तो बस आज के लिए इतना ही है, और कुछ अपडेट्स आता है तो मैं अपने चैनल पे ज़रूर वो अपडेट्स डाल दूँगी। तो बस बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। नए अपडेट के साथ नए वीडियो में वापस मैं आपसे मिलूँगी।